We already know that there are many variables which affect the quantity demanded of a product. For example, we have discussed in the previous session that price of the commodity is one of the factor, then price of related commodities, consumers' income. So these are the main three components which affect quantity demanded of any consumer. So let us see types of elasticity of demand on the basis of factors which affects quantity demand change. So based on the variable that affects the demand, the elasticity of demand is of the following type. So there are following different types of elasticity of demand depending on the factors which affect change in quantity demanded. So quantity demanded में जब भी change आता है तो वो कुछ factors के वजह से आता है. So because of those factors, the quantity demanded changes, and that change, that elasticity is named after those factors. For example, the price change, the change in price of the commodity tells us price elasticity. Change in income of the consumer and its change, and because of that change in quantity demanded tells us income elasticity. Change in price of related commodities and its quantity demanded gives us cross elasticity. So let us see. So one point to note is that unless otherwise mentioned, whenever elasticity of demand is mentioned, it implies price elasticity. Always remember, in any question, in any situation, when elasticity of demand is mentioned, we are actually talking about price elasticity. Until and unless it is specifically mentioned कि वो income elasticity के बारे में बात कर रहे हैं या cross elasticity के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर इलास्टिसिटी का मतलब नॉर्मली प्राइस इलास्टिसिटी ही होता है. तो एक बार देख लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी किसे कहते हैं. द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is the response of the quantity demanded to change in price of a commodity. It is assumed that the consumer's income, taste, and price of all other goods are steady and not changing. It is measured as a percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. So price elasticity का मतलब है कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा अगर प्राइस में चेंज आता है तो इसको निकालने का प्राइस इलास्टिसिटी कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, कितना है, उसको निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज. मतलब आपके क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट का चेंज आया है उसको ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए, डिवाइड करके नीचे लिखिए, डिवाइडेड में डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन प्राइस की प्राइस में कितना फ़र्क आया है. इस डायग्राम को एक बार देखते हैं. इस डायग्राम को देखते हैं. प्राइस इलास्टिक डिमांड को बहुत अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. In this particular image, we can see that the cola, there are two pictures, two figures. So in one figure, in one picture, it is shown that the cola is priced at $1, and in the other picture, the price of the cola is $3. So in the first picture, when the price of the cola was $1, at that time the customer thinks the price of the product is amazing, it's good price, and it is very low, and because of that reason the customer is buying more and more of cola. I think I made my point clear. When the customer thinks the price of the product is low, the price of the product have reduced, at that point of time the customer tends to buy more. So even if the customer needs only one bottle of cola, he bought 4 bottles of cola. Why? The reason being the price of the cola is only $1. In the other picture, in the other image, we can see that the price of the cola have now increased to $3 per bottle. So in that case, the customer thinks, forget it, I don't want to buy it. The reason being it is too expensive for me to buy that cola. In the first image, we can see that if the customer is buying 4 bottles, he is spending $4. But in the second image, the price of the cola, a single bottle, is now $3, and he is not ready to spend $3 on a single bottle of cola. So this is how price elasticity is affecting quantity demanded.
So change in price is affecting my quantity demanded, and this is what price elasticity tells us. So formula for computing price elasticity of demand is percentage change in quantity demanded by percentage change in price. I have already told you this. And there is another formula which is mentioned, change in quantity demanded of product by change in price of the product multiply original price of the product divided by original quantity of product. So here we are not actually measuring the percentage, but we are actually writing down the change in quantity. For example, let me tell you, for example, I used to buy 10 units of cola, for example, in the entire month when the price of the product was say 10 rupees. Now the price of the product increased from 10 rupees to 12 rupees. So change in quantity demanded I will write. And now because of change in price from 10 rupees to 12 rupees, I am now purchasing 8 bottles. Instead of 10 bottles, I am now purchasing 8 bottles. So change in quantity demanded is 10 bottle minus 8 bottle, 2 bottles. Change in price is 10 rupees minus 8 rupees, 2 rupees. And multiply original price was 10 rupees and original quantity was 10 units. So that is how we write it. So here elasticity of price is represented by this particular formula, delta Q by delta P. This triangular sign is called delta. So delta means change. Okay, so change in Q by change in price multiply P by Q. So delta Q means change in quantity demanded, delta P means change in price of the product, P means original price, Q means original quantity. So delta P by delta Q multiply P by Q. This formula, if we put our data in this particular formula, we will find out what is the price elasticity of the product that we are measuring. Now let us come to income elasticity. So in this particular image, we can see that when the income of this particular consumer increased, he is imagining so much to buy from the shop. So when your income increases, the consumers always tend to buy more. So the income elasticity of demand is the degree of responsiveness of the quantity demanded to change in consumer's income. So when it happens both ways, So in situation when the income of the consumer increases, the consumer will tend to buy more. मतलब इनकम अगर कंज्यूमर का बढ़ता है, इनकम अगर ज़्यादा होता है, कंज्यूमर विल बाई, जो हम लोग हैं, हम लोग ज़्यादा सामान खरीदते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसे होते हैं. अगर उसी तरह से इनकम मेरा घट गया, अगर किसी भी सिचुएशन के किसी भी कारण के वजह से मेरा नौकरी चला गया या फिर आई एम सफरिंग ह्यूज लॉसेस इन माय बिजनेस, आई विल ट्राई टू रिड्यूस माय डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स. So it happens both ways. So in income increases my quantity demanded, income decreases my quantity demanded. So this is the responsiveness of quantity demanded with change in income of the consumer tells us income elasticity. So the formula for computing income elasticity of demand is percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income. Okay, so now let us see cross elasticity. We all know that Apple phones and Samsung phones are the biggest brands of smartphones in this world. So they are very competitive, they are very good phones, but there is a very big competition in between them. So people who use Apple phones, they hate Samsung phones. Why? I don't know. Wow. What is the matter with them? But people who use Android phones or Samsung phones, they hate Apple phones. Why? Because they keep so much of high price. So there is a constant fight between these two brands. So now these fights, ये जो लड़ाई है, ये हमेशा हमें दिखती है उसके प्राइस में. So there are situation when Apple introduces new phones, उस टाइम पे Apple अपने प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वो थोड़ा सा कम्पिटिटिव रखता है. सैमसंग का प्राइस का फ़ोन जो है उसी लेवल पे. सो एट दैट टाइम पीपल यूज टू बाई मोर ऑफ सैमसंग फ़ोन्स. मेरा कहने का मतलब है जब
एप्पल फ़ोन्स मार्केट में बिकते हैं, एप्पल फ़ोन्स अगर अपने प्राइस को घटा देते हैं तो हम लोग एप्पल फ़ोन्स ज़्यादा खरीदेंगे, सैमसंग नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर एप्पल फ़ोन अपना प्राइस बढ़ाता है, अगर एप्पल फ़ोन के जगह पे आप सैमसंग खरीदते हैं, इसका मतलब क्या है कि सैमसंग का प्राइस जो है वो लो है। सो इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है जब दो पैरेलल प्रोडक्ट्स हैं, दोनों अगर आपके रिलेटेड कमोडिटीज़ हैं, दोनों रिलेटेड है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में भी होता है। मैं यहाँ पे दो फोन्स, दोनों फोन आर, बोथ ऑफ दीज फोन्स आर स्मार्टफोन्स, सो आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल। सी, if price of Samsung reduces, instead of buying Apple phones, people will buy more of Samsung phones, है ना। सो अगर अगर ये दोनों प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ए है, वो प्रोडक्ट बी है, दोनों को अगर आप देखें, अगर ए प्रोडक्ट अपना प्राइस को बढ़ाता है तो हम लोग बी को खरीदेंगे। मतलब अगर एप्पल फ़ोन्स अपना प्राइस बढ़ाता है तो हम लोग सैमसंग के फ़ोन्स खरीदेंगे। इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। सो क्रॉस इलास्टिसिटी of demand of a commodity A for another commodity B is the change in demand of commodity A due to change in price of commodity B. So अगर आप A commodity और B commodity के बारे में सोच रहे हैं तो B commodity के प्राइस के चेंज के वजह से commodity A का डिमांड में चेंज आ रहा है। मतलब एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आता है जिसके वजह से हम लोग उसके रिलेटेड कमोडिटी के डिमांड को चेंज में लाते हैं। उसे हम लोग कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। द फॉर्मूला इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट ए डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी मल्टीप्लाई ओरिजिनल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए, और डेल्टा क्यू ए बाय डेल्टा पी बी मल्टीप्लाई पी बी बाय क्यू ए। सो डेल्टा क्यू ए मीन्स change in quantity demanded of a product A, and delta PB means change in price of product B, and PB means original price of product B, and QA means original quantity of product A. So I hope ये समझ में आया। मैं वापस से एक बार आपको बताता हूँ कि क्रॉस इलास्टिसिटी मीन्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल सैमसंग का प्राइस अगर घटता है तो पीपल विल बाय मोर ऑफ एप्पल फोन्स, राइट। सो इसे कहते हैं हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी, कि एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड में चेंज आता है। दैट इज व्हाट प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी मीन्स।